So hey guys, welcome back to my channel. This is Miss Versatile Educator, and today I'm back with the same topic but with another part. So in this video we will be discussing about the shape of cell, size of cell, its type, structure and everything about it. Okay. In my last video, the fundamental unit of life part 1, I have cleared all the basics related to this topic. So let's directly come on to the shape of cell. Okay, so in different living organisms have different shape of cell. So they keep varying in different organism. मतलब ये है कि जो शेप है सेल का वो कभी भी एक जैसा हर ऑर्गेनिज्म में नहीं रहता, हमेशा वो अपना शेप चेंज करता रहता है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अदर शेप होगा, दूसरा शेप होगा, किसी और ऑर्गेनिज्म में अदर शेप होगा, किसी एनिमल्स में अलग शेप होगा. सो अब इसके कुछ मेन हम पार्ट्स बात कर लेते हैं. जैसे कि अगर बात कर ली जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स. ओके, तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स कौन सा है. सो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स इज what is this? It's obviously nerve cell. Okay, so what is the largest cell in human beings? It's nerve cell and its size is 90 centimeter. Let me write it down. Largest cell in human beings is nerve cell. Okay, and what is its dimension? Its dimensions are 90 centimeter. Okay, so in human beings the largest cell is nerve cell whose dimension is 90 centimeter, and the smallest cell in human beings is sperm cell whose dimension is 0.05 millimeter. That is okay. So smallest cell, I'm telling you about human beings. Okay, so here will be sperm cell. से स्मॉलेस्ट सेल है जिसका डायमेंशन है 0.05 मिलीमीटर. ओके, अब आ जाते हैं कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन सा है. सो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब बात की जाती है तो उसमें सबसे छोटा सेल होता है पीपीएलओ. कौन सा होता है, पीपीएलओ. अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं. प्लूरो pneumonia like organism. ओके, सो पूरे लिविंग वर्ल्ड में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा सेल माना जाता है. ठीक है, और द नेक्स्ट फिर हमें क्या डिस्कस करना है. हाँ, स्मॉलेस्ट हो गया. अब लार्जेस्ट सेल इन मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो द लार्जेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज what is it? It's ostrich cell. What is it's ostrich egg? And what's large about it, what's big about it? So ostrich cell, let me tell you, its weight is 2.5 kg. So that is why it is considered as the largest cell in all living organisms. Okay, now let's see the next topic, which is size of cell. साइज ऑफ सेल. जब शेप वैरी करता है तो साइज भी ऑब्वियसली वैरी करता होगा. सो वी कैन से दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट साइज ऑफ देयर सेल्स. ओके, तो अब इसकी बात कर लीजिए. शेप हो गया, साइज हो गया, टाइप्स हो गया. अब नाउ लेट्स कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल डिवीजन, बेस्ड ऑन देयर सेल्स. ओके, सो इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की कितने नंबर ऑफ उसमें सेल्स हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. मैं ये आपको अभी बताती हूँ, बट नंबर में पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज नंबर्स हम यहाँ क्या डिपेक्ट करना चाहते हैं. ओके, सो जब नंबर की बात की जाती है, लेट्स सी व्हाट इज दैट. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, व्हाट इज इट? On the basis of number, cell organisms are divided into two parts, that is unicellular, cellular organisms. Okay, unicellular organisms and multicellular organisms. It's quite easy to learn about. Okay, multicellular organisms. So uni, the word uni here, you must be knowing that uni is referred to as one and multi means many.
like multicolor. When we say then we are saying that it is consists of many colors. Then here cellular means organism means living thing, and cellular means made up of cells. So it is very clear to you, unicellular organism means the organisms which are made up of only one cell. They are known as unicellular organisms. Like we can take an example as amoeba, amoeba, hydra. They all are unicellular. Let's talk about some features of unicellular organisms. Okay, so there is no labor division between unicellular organisms because there is only one cell. So how can their labor be divided? Okay, and the second feature is that labor is done. Then we will talk about multicellular. Then multicellular are consists of many cells. Then obviously there will be labor division. So in multicellular organism, labor division is there. Labor division होता है और complex body organization. क्या होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. और ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे तो इसका ऑपोजिट यूनिसेलुलर में होता होगा, राइट. तो जब इसमें कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें सिंपल होता होगा, क्योंकि एक ही सेल है तो उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स दिखाया जाएगा, राइट. सो ये हो गया हमारा. फिर हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. अब यहाँ पे न्यूक्लियस से क्या रेफर किया जा रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स into two parts: eukaryotic organisms and prokaryotic organisms. Okay, so let's see what's there about. On the basis of number also there are two types, and on the basis of nucleus also there is two types of organisms. Okay, let's see. Eukaryotic organisms and prokaryotic organisms. Then when the organisms, okay, so let's again come on to the word eu and pro. Karyotic is same over here. Okay, so eu means true. What does eu means? Eu means true. Eu means true, and pro here means false. Why false? Okay, and carry on means living made up of cell. Okay, so the living organisms made up of the cell in which there is true nucleus. True nucleus मतलब क्या यहाँ पे, जिसमें न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो. लाइक ये सेल है हमारा सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होगा. न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर होगा, और यहाँ पे ये जो एरिया है न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला, ये एरिया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है. तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि ये जो सेल है ये हमारा कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक है, राइट. क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरी तरह से सराउंडेड. ओके, और जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ये प्रो मीन्स फॉल्स एंड कैरियोटिक मीन्स मेड अप ऑफ सेल, and organism means living organism obviously. So हम दूसरा सेल बना लेते हैं. Pro means false, chromatin fiber. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हो there is no nuclear membrane, which is nuclear membrane is absent. Okay, so the organism in which nuclear membrane is absent is known as prokaryotic organism, and the organisms which are made up of true nucleus. True nucleus means the nucleus of that cell is surrounded by nuclear membrane is referred to as eukaryotic organisms. That is done. Now let's come on to structure. अब स्ट्रक्चर से क्या रेफर किया जा रहा है. अब जब सेल है भाई साहब, जब सेल है तो सेल में कई चीजें होती होंगी. लेट्स फर्स्टली ड्रॉ सेल. ओके, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स. So without diagram we cannot continue to study. Yeah? So first let's make cell, nucleus, chromatin fiber, nuclear membrane, and then there is cytoplasm.
Here is, this is cell membrane. Okay, what is this? This is cell membrane. मैं यहाँ पे लेबलिंग कर दे रही हूँ. न्यूक्लियस हो गया और ये साइटोप्लाज्म. ये जो आपको डॉटी स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे डॉट से रेफर किया है, ये इट इज साइटोप्लाज्म. One by one, I'm going to tell you the definitions. Okay, so firstly, let's talk about cell membrane. What is cell membrane? Cell membrane is the outermost layer, outermost covering layer, anything you can call it. Outermost layer or outermost covering of cell is known as cell membrane. And then is cell wall, right? The second topic we have wrote here is cell wall. So what is cell wall? This is cell membrane, and there is another wall made up of cellulose. What is cell wall made up of? Made up of cellulose. Okay. So the outermost covering is cell membrane. Then is cell wall. So I am telling you that cell wall is only present in plant cell, not in animal cell. Why? Because see, plants are just step on their place, they do not move or do anything, and animals are just keep moving always, so they can protect themselves from harsh conditions or any other animals or something. So in plants, what happens? Cell wall is there for their maintenance of what to protect them from harsh conditions and other harmful animals. Okay, cell wall is done. Then comes on to cytoplasm. What is cytoplasm? Sorry, cytoplasm we are talking is, then it is jelly-like structure. What is it? Jelly-like structure. It is neither liquid nor solid. So what is it? It's semi-solid jelly-like structure consisting of all the cell organelles is known as cytoplasm. I'm again repeating. What is cytoplasm? Cytoplasm is the jelly-like structure filled inside the cell consisting of all the cell organelles. यहाँ पे हमारे छोटे छोटे सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. मैं आपको बात बता रही हूँ. ओके, सो साइटोप्लाज्म हो गया हमारा. देन इज सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल के डिफरेंट वर्क्स में काम आ रहे हैं. जैसे उसके पावर हाउस, मतलब उसको पावर प्रोटीन और एनीथिंग, मतलब उसको जो भी काम होता है, सारे काम उसके ऑब्वियसली जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं वैसे इसके भी ऑर्गन्स होते हैं. सो व्हाट आर सेल ऑर्गन्स एज द वर्ड डिफाइंस. यहाँ पे हमारा ऑर्गन वर्ड है. The tiny structures present inside the cytoplasm, which are just floating or just stuck on their places inside the cell, are known as cell organelles. और आप उसमें एक और सेंटेंस ऐड कर सकते हो in the definition of cell organelles, that they perform different functions for the cell. Okay, so I have covered all the topic over here, and here is also the diagram of cell, right? It is the diagram of cell. And I think would be very clear to you. Okay, so I think it would be very clear to you, and that's all for today, and thank you for watching this video.